now. This is the to join. So in the last lecture, we started colligative properties, and in colligative properties, we have to study 4 colligative properties. And you don't need to write this thing. We're just starting this now. Okay? We have to study 4 colligative properties. The first one is relative lowering of vapor pressure. Second, we have to study the elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Then we have to thirdly study the depression in freezing point. Depression in freezing point. And fourth, we have to study the osmotic pressure. We have already learned relative lowering of vapor pressure. The formula for this is phi V. This is equal to P naught A minus PS divided by P naught. And in today's class, we'll be learning about elevation boiling point and depression in freezing point mode. Okay? So please write the topic. Elevation in boiling point. राहा आपकी क्लास कल हुई थी ना? यस सर। आपने कहा था कि आपको केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करना, राइट? यस सर। सॉरी, मेरी तरफ से मिस्टेक हो गया। ठीक है, आपको मैं सोल्यूशन वाले बैच में ऐड करा दिया, नॉट अ प्रॉब्लम। आज आपकी कोई क्लास है क्या फ्रॉम 6:30 PM? लर्निंग में कोई क्लास है आज आपकी? और नो सर। तो आपको ना 6 यू आर इन कतर, राइट? कतर शेयर्स टाइम्स विद, सॉरी, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा 6:30 PM। विल दैट वर्क? यस सर। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, दैट्स अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। हमने गलती से उनको इस बैच का आईडी दे दिया था। लिंक विल बी द सेम। ठीक है, ओके सर। लिंक विल बी द सेम। अगर आपको स्टे करना है यहाँ पे रिवाइज करने के लिए, नो सर, जॉइन बैक एट 6:30। सॉरी, इज एट 6:30? ठीक यस सर, जॉइन बैक एट 6:30। है ना? काइनेटिक्स काइनेटिक्स आप रिवाइज कर दिया, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सॉरी 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 फॉर हाँ इट सर। सर। मरियम बतूल, कैन यू हियर मी? मरियम, आमना, अस्सलाम वालेकुम। am I audible, आमना? वालेकुम अस्सलाम सर। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में लिखिएगा। ठीक है, आई विल राइट दिस डाउन, प्लीज राइट दिस विद मी, देन आई विल एक्सप्लेन। वेपर प्रेशर decreases on addition of
on addition of non-volatile solute. On addition of non-volatile solute. Hello. Hi, Amarnath. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Amarnath, did you revise few things from solution chapter? Yeah, we have next Um, others. No. no, sir, but it's fine. I can catch up. Yeah, you can trust. No problem. Okay, so please start writing. And also, like, take care of the time. Huh? You're 12 minutes late. Okay, Amarnath? Yeah, I was not aware of today's class because earlier it was showing only on Tuesday. Oh, so, please start writing. Elevation of in boiling point is the second qualitative property. It is saying vapor pressure decreases on addition of non-volatile solute. Hence, the solution would require higher temperature to reach vapor pressure of 1 atm and eventually the boiling point of solution will increase. Boiling point of solution will increase. Please raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done writing. तो आप समझने की कोशिश करते हैं what is happening here. You don't need to write anything. Please try to understand. But first of all, we will be having, let's suppose, only water we are having. Okay. So this water, it will have certain vapor pressure. We'll be having certain vapor pressure. Now, when you add solute in it, in the last lecture, we have seen relative lowering of vapor pressure. In relative lowering of vapor pressure, what happens? We have written that vapor pressure of the solution decreases on adding non-volatile solute. You understand what? Why does it happen? Because the solute particle, it occupies certain space in the surface, and this particular space, it is occupied by solute, and that is why less amount of space is present for the solvent molecules. So if you have only solvent, the complete surface is occupied by solvent. If you will be adding solute, then some of the volume or some of the places, it will be occupied by the solute particles also. Now, from here, what will happen? There will be less solvent in the surface. That is why there will be less evaporation. There will be less evaporation. That means there will be less vapors. And the vapors भी क्या होंगे? कम होंगे. And if the vapor is less, then what will happen? Vapor pressure will decrease. So first time में आपको इस मिनट that we have already done. That vapor pressure decreases on addition of non-volatile solute. ठीक है? If you don't understand right now, to revise the relative lowering of vapor pressure, you will understand it. But and if you don't understand, to revise कीजिए. ठीक है? But for now, what you will do, you will take this as a fact that vapor pressure decreases on addition of a non-volatile solute. If you're adding a solid solute, the non-volatile means solid solute अगर आप add कर रहे हैं, then what's going to happen? Then the vapor pressure of the solution is going to decrease. Take that as a fact. Now, what will happen? What will be the effect on the boiling point? The boiling point is what? Boiling point is basically the temperature at which
vapor pressure is equal to 1 atm. Boiling point is that temperature at which the vapor pressure it is equal to 1 atm. Now let's suppose normal, अगर हम solvent की बात करें, solvent vapor pressure है, solvent का कितना? Let's suppose we have 0.5 atm. So solvent vapor pressure is 0.5 atm. In order to boil, we have to reach how much? We have to reach 1 atm. How will we reach 1 atm? By heating. By heating, by increasing the temperature. But when you add a solute in it, the solution बन चुका है now. Now we have solution. And the solution, the vapor pressure will be what? It will be a bit less than that of solvent. Let's suppose 0.2 atm. And from 0.2 atm, I have to reach 1 atm in order to boil. This will also happen by what? By heating. It is obvious that in the case of solvent, we have to give less temperature than in the case of solution. In solution, we will have to be giving what? We will have to giving more temperature to boil. Why? Because when we had only solvent, we were going from 0.5 to 1 atm. But when we are in solution, then we have to go from 0.2 to 1 atm. So from 0.2 to 1 atm, it is a large difference. That is why we have to give more temperature in order to boil. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Amna, Amarnath, and Mariam. Yeah. Okay. This is it. Elevation and boiling point. Together. In brackets here, we will write delta TB. This is how we show it. And what is delta TB? Delta TB is equal to the boiling point of solution TB minus T naught B. T naught B is the boiling point of solvent. Assalamu alaikum. Rafia, how are you? I'm fine, sir. How are you? Why are you so late, Rafia? You are 20 minutes late in 1.5 hour class. Yes, sir. जी राफिया बताइए क्या हुआ? Why are you late? Sir, actually, my father forgot to send the link, so I didn't know there was a class. ठीक है. You save this particular link. ठीक है? For chemistry class, this will be the link always. Now you will never even open the chat of your father in order to join the meeting. In the WhatsApp, do you have a group in which only you are present? आप अपने आप को मैसेज भेजते होंगे ना कुछ तो, है ना आपके पास? आप वहां पे इस लिंक को भेज दीजिए. दिस इज अ परमानेंट लिंक फॉर केमिस्ट्री क्लास. ओके राफिया? Yes, sir. Until unless there is a major change, ठीक है? लेकिन आपके हमेशा क्या रहेगा? ये रहेगा. ठीक है? Same link, same time. Okay, Rafiya? So you'll not even open your father's chat, you will join the meeting. ठीक है? चलिए अब यहीं से लिखिएगा आप. Have you done solution chapter? आप लास्ट कब आई थी वैसे राफिया the class? Last Wednesday were you present in the class? Yes, Last Wednesday? I was there. The relative lowering of paper pressure में आप थे. हाँ. ठीक है. एक काम कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक जो हमने कराया. Okay. You don't have to write this part. This part को लिखना नहीं है. Take a screenshot. I will wait for 5 seconds. 5, 4, Right. and now write this. Leave some space for the above part and इसको लिखिए. Delta TB is equal to TB minus T naught. This is the boiling point of pure solvent. है ना? Boiling point of pure solvent. Pure लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं. Solvent when we are saying it is obviously pure only. After this, you will write graph of elevation in boiling point. Topics graph. First of all.
So I'm pasting a graph, and please don't write the graph. First of all, we'll understand the graph, and then only you are going to copy this down. ठीक है? आराम से बस देखिएगा, जहां फोकस करने के लिए कहेंगे ना वहां पे फोकस कीजिएगा, and ignore the other parts. So whenever you have to understand a graph, first of all, you have to look at the x-axis, the y-axis. So what we are having x-axis पर temperature हमारे पास, and y-axis में we have vapor pressure. In general, क्या होना चाहिए? On increasing the temperature increases, so what should be achieved? There will be increase in vapor pressure also. Why? Because if you are going to increase the temperature, then there will be more vapors. So evaporation high होगा. Evaporation से क्या होगा? Vapor बनेगी. And if you are having vapors, then there will be more vapor pressures. Make sense? Yes or no, guys? ठीक है? खाना बोलेंगे please. What this is on increasing temperature, vapor pressure increases. Amarnath, Amna, Mariam, and Rafia. Amna, Mariam, Rafia. Got this? Yes or no, please? Sir? Am I audible properly? Rafia, am I audible? Yes, sir. Now you are audible. Can you repeat, sir? I was saying on increasing the temperature, vapor pressure increases. Because जब temperature increase करेंगे, then evaporation will be occurring in faster way. Due to evaporation, there will be more vapors. Due to more vapors, there will be more vapor pressure. Make sense? Make Yes, sir. sense? Thank you very much. ठीक है, हम देख लेते हैं. First of all, we will look at what? The solvent. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Solvent को देखें. So what is happening in solvent? Solvent initially it had vapor pressure here. है ना? इसको हम directly ले लेते हैं. The vapor pressure was here initially. And what happened? As you increase the temperature, then the vapor pressure will also increase. At this temperature, we had this vapor pressure. Temperature increase कर रहा है. So slowly, what is happening? Vapor pressure is also increasing. And at this point, this is the 180. At this point, it became 180. So we can say that this is the boiling point of the solvent. Temperature at which vapor pressure is equal to 180, and that is boiling point. So at this temperature, so ये temperature कौन सा हो जाएगा? Here it reached 1 atm. So what is the temperature? You will go down. You'll see, okay, fine, this is the temperature. Then, when as soon as you add a non-volatile solute, that is the solid solute, the vapor pressure will decrease. And as you can see, यहाँ पे, as you can see, इसको अगर हम और extrapolate करें ना, at the same temperature, the vapor pressure will be something here. And as you can see, the same temperature. Both of these are in same temperature, but as you can see, the vapor pressure is lower, है ना? Dew point is lower. वही यहाँ पे है आपके पास. Now when you are going to increase the temperature, then slowly what will happen? Slowly the vapor pressure will also increase, and at this point it will reach 1 atm. What is the temperature at this point? It is here. And what does it show? That solution, it was boiling at this temperature, but this solvent was boiling at this temperature. Solution is boiling at this temperature. ठीक है? So this is the graph basically. अब आप ग्राफ को बना सकते हैं. Also, we can say that if you add more solute, if you add more solute, then the difference in the temperature of boiling point of solute and solvent will be larger. So delta TB जो होगा, that will be proportional to the concentration of the amount of solute particles. Solute particles के amount to concentration terms remove करते हैं. The concentration terms which is used here, it is molality. Rather, delta TB is proportional to molality. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बस इतना हुआ. If we add more solute, the difference in the boiling point of solute and solvent and solution will be high. उतना आपको जानने की जरूरत नहीं. इसको लिखिए delta TB molality. If we remove the proportionality sign, then we get delta TB is equal to proportionality constant, that is written as KB into M, that is molality. What is KB here? KB is molar elevation constant or ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant. By the way, it is also sometimes written as molar boiling point elevation constant. है ना? Molar boiling point elevation constant or molar elevation constant is also fine.
बट इसको आप याद रखिएगा, जनरली बच्चे ये भूल जाते हैं, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट. Now we will see what is the meaning of this evoluoscopic constant. हो गया सबका? Let me know once you're done writing. Just raise your hand if you're done. सिर्फ आपको राफिया हैंड रेस करने नहीं है अभी तक. आ गया फिर, कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड. इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? ब्रैकेट पे लिख देंगे केबी. ठीक है. सो प्लीज सी हियर, हमारे पास डेल्टा टीबी क्या है? इज इक्वल टू केबी इनटू एम. ठीक है. सो प्लीज सी, अगर हम वन मोलालिटी का है ना, इफ द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज वन, ठीक है, molality of the solution is 1, then when m it is equal to 1 moles per kg, that is the unit, moles per kg, delta tb will be equal to kb. तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? kb is the elevation in boiling point. Hey, what is this? This is elevation in boiling point. kb it is equal to elevation in boiling point when molality is equal to 1 moles per kg. और सिंबारी लिख लिया, मतलब सुनिए जरा. Evoluoscopic constant is the elevation in boiling point. Is the, ये स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं ना, AB it is equal to delta TB when molality is equal to 1 moles per kg. That's the definition. बात समझ में आई सबको? आया ना, बताएं. AB is elevation in, आया ना, बोले what the session official me guys? Elevation in boiling point when concentration of solution is 1 molar. ठीक है. समटाइम्स यूनिटी का वर्ड भी आपके पास आएगा. यूनिटी का मतलब 1 होता है. अमरनाथ, आमना, मरियम, राफिया, बोलिए भाई, व्हाट दिस, यस और नो सबको? Yeah, yeah. ये सब, सॉरी व्हाट आमना? Got it, sir. Got it, हाँ. अमरनाथ, यू? Yes, sir. Yes. ठीक है. आप जब तक लिखिए, पूरा स्पेस आपकी कॉपी में अगर होगा ना, ये यहाँ पे यूनिट्स के बारे में लिखें. यूनिट के लिए बहुत आसान है. यूनिट क्या होगा? केबी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, थोड़ा रिएरेंज करेंगे तो, डेल्टा टीबी अपॉन एम. राइट. सो डेल्टा टीबी जो होगा दैट विल बी इन केल्विन, मोलालिटी विल बी इन केजी पर मोल. मोल्स पर केजी ना, मोलालिटी नहीं बोल रहा हूँ, मोल्स पर केजी.
So if I write the unit for kb, then unit क्या हो जाएगा इसके लिए? देखिए केल्विन तो ऊपर रहेगा, kg inverse है, it will go above and it will become kg. Mole will go above, it will become mole inverse. Kelvin kg mole inverse. This will be the unit. Kelvin kg mole inverse. Let me know once you're done. Both Amarnath and Amna. Okay. Moving on. Let's take the determination of MB. MB का मतलब molar mass of solute using delta T and elevation in boiling point. ठीक है, ध्यान से देख लीजिए पहले. Don't write now. We know that delta TB it is equal to KB into M. KB into molality. You can write delta TB it is equal to PB. For molality, I can write what? Moles of solute divided by mass of solvent. Moles के लिए लिख सकते हैं हम the given mass of solute divided by the molar mass of solute. Whole thing divided by the mass of solvent in kg. This will give you the number of moles divided by mass of solvent in kg. We can rearrange this, and if I want to convert this WA into grams, this will become delta TB is equal to KB into WB into 1000. ऐसे बता दें 1000 डायरेक्ट कहाँ से आ जाएगा, we need divide by MB will go down into WA. If I want to keep WA in grams, I will have to divide this. Like WA को kg में रहना चाहिए, है ना? बट अगर ग्राम्स में दिया हुआ तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, राइट? Dividing by 1000 in the denominator or multiplying by 1000 in the numerator is the same thing. तो 1000 ऊपर आ जाएगा. This will be your formula. ठीक है? This will be your expanded form. ये नहीं है, अब यहाँ पे बस आपको MB के लिए क्या करना है? Just need to write the whole equation for MB. Molar mass of solute. It is equal to KB into WB into 1000 whole thing divided by delta TB into W A, and this A should be in grams, है ना? ये आपका फॉर्मूला आ चुका है किसके लिए? फॉर द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. नो नीड टू राइट नाउ, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा यहाँ. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. लाइक यू विल अप्रिशिएट द केमिस्ट्री दैट इज हैपनिंग हियर. Molar mass of a solute is a microscopic thing that basically it gives an idea about the mass of one molecule. Make sense? Yes or no, please tell me. Mass of one molecule of a solute. क्या ख्याल है अमरनाथ, आमर, मरियम एंड राफिया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो ये होगा ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. माइक ऑन करके रखें प्लीज. कैन यू माइक ऑन? अरे अरे भाई इतना ज्यादा टाइम लगेगा. माइक ऑन कीजिए ना प्लीज. अमरनाथ, आमर, मरियम, संख्या. ओह गॉड, माइक ऑन नहीं हो रहा आप लोगों से. अमरनाथ आप. No, so your question is not clear. हाँ हाँ ठीक है, माइक ऑन करना. माइक ऑन करना क्लियर नहीं है क्या? माइक ऑन क्लियर है, माइक ऑन करना तो क्लियर है.
please turn your mic on. Is this clear? Amarnath, can you hear that properly? So the formula is clear, but your question was not clear. No, when I'm saying turn your mic on, is that clear? Yeah. Turn your mic on. We will ask the question once again. Amna, Mariam, Rafia, Yes, sir. Yes, sir. MB. What is MB? Molar What mass is of this? solute. Solute. B is used for solute. Molar mass of solute, it is a microscopic thing. It tells you about the mass of one molecule. Correct? Yes. Yeah. Mass of. So think about, like, how can we know the mass of one molecule of NaCl? Like, think about the kind of experiment we have to do in order to get the mass of one molecule of it. It is infinitely difficult, I would say, to get one molecule of NaCl and get the mass of it. Does that make sense? Right now, you don't know that mass of sodium atom is 23. You don't know the mass of Cl is 35.5. ना उस हिसाब से हम कह रहे हैं. Think with those terms. How did somebody got the mass of sodium? How did somebody got the mass of NaCl? For the first time. Make sense, everyone? Yes or no, please tell me. Yeah. All of you are in the same level. Rafia, Mariam, tell me. Amna. Yes, sir. Yes, sir. See. So you understand that it is a microscopic thing. That we, like one molecule of NaCl, you can't even see that. Yeah. Now, this Kb, it is a constant. Does that make sense? Kb is a constant, yes or no? Okay. So the value of Kb will be knowing. How will be knowing? वो अगर आप पूछें, then it's quite easy. जैसे, for example, if I take if we take certain, ऐसा कर लेते हैं. If we take certain NaCl solution, है ना? 1 molar, 2 molar, 3 molar, 4 molar NaCl solution we have taken. और इसके लिए delta Tb1 आएगा, delta Tb2 आएगा, the change in element delta Tb3 आएगा, because the concentration is changing, है ना? And delta Tb4 आएगा. So we can easily calculate the Kb ना. इसमें से Kb हमारे पास मिल जाएगा. Kb will be equal to what? Delta Tb upon whatever the molality is. From this particular equation, we can get the Kb. Or let's suppose किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है पहले, and they have calculated the Kb. They have calculated the Kb. And now you have Kb of what? Kb of water. And now you have been given a solution. इसमें कहा गया कि we have added something in it, calculate the molar mass. That is the problem we are dealing with. You have been given. अब ये काम कहाँ पे आएगा? देखिए, काम हो जाएगा. For example, if you have blood, है ना? How to know that blood में heroin है या फिर cocaine है? If somebody is doing drugs, how could we know in the blood we have cocaine or heroin? There will be Kb for blood. ठीक है? There will be Kb for blood. Fine? ध्यान दीजिए next. And we have said that I have added, let's suppose 20 grams in it. 20 grams of some drugs, it is present. Now, what is the drug? You have to identify. Fine? 20 grams. So Kb for blood, it is present in some literature. या फिर आप Google कर. Mass of the solute we have given 20 grams. 1000 is just a number. Delta Tb. ठीक है? Delta Tb क्या? Delta Tb. Change in temperature. हाँ, change in temperature of what? Tb minus T naught B. Tb minus T. हाँ, है ना? This is the solution. Solution जिसमें blood with the drug. Blood with the drug. You will boil it and you will calculate. You आप thermometer लगा के boil कर लीजिए. You will get the boiling point of that particular solution. And then you take your blood and then you boil it. ठीक है? You take your blood and boil it. उन दोनों का difference निकल जाएगा TB से. So this is delta TB from experiment, from boiling. दोनों चीज को बॉइल कीजिए, उसके बाद मिल जाएगा. यू मस्ट बी गिवन द सोल्यूशन. तो उसमें अगर 20 ग्राम सॉल्यूट है एंड यू कैन मेजर द मास ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूशन में से W सॉल्वेंट सोल्यूट का मास निकाल दीजिए, यू विल गेट द मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है? तो ये भी आपके पास है. सो फ्रॉम ऑल दिस डेटा यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. और फिर मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो आप देख लीजिएगा. मतलब फॉर एग्जांपल दे आर गिविंग यू एन ऑप्शन कोकेन, हेरोइन और what is the molar mass which is matching the
मोलर मास ऑफ प्रोटीन, द मोलर जो भी हम लोग कैलकुलेट करें, दैट्स मैचिंग द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मोलर मास ऑफ हेरोइन, मोलर मास ऑफ लेट अस सपोज यू हैव समथिंग इज मेटफॉर्मिन हो गया आपके पास मान लीजिए, ठीक है। सो इन सब में से किसमें करता है, एंड दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट द मोलर मास। नाउ दिस इज द पावर ऑफ थ्योरी, seemingly very bookish knowledge, but I hope you can understand the application. Is something that is very molecular level, which is very microscopic level. You can easily identify what particle or what solute is present if you know a few data. मतलब थोड़ा सा डेटा अगर आपके पास है तो आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। इवन इफ ना फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या दिया गया, आपको कुछ पाउडर दिया गया है ना, एंड यू डोंट हैव मच इक्विपमेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर दिस वाइट स्टफ इट इज हेरोइन और कोकीन। तो ये ड्रग के क्या मतलब है, मान लेते हैं आपको पाउडर करके कुछ दिया हुआ है, देयर आस्किंग वेदर इट इज शुगर और it is a sugar, but you have to identify whether it is glucose, sucrose, or फिर some complex sugar, dextrose वगैरह होता है, क्या है ये? So what you will do, you will add that white stuff into water, measure the change in boiling point of solution, and water का तो पता है आप लोग को 273 होता है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपके पास, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है, केपी ऑफ वाटर आप गूगल कर लीजिएगा, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। Once you know what is the molar mass of the solute, then you will know what type of sugar it is. It is dextrose, it is maltose, or it is sucrose, or it is fructose. क्या है? मर्सिनरी है, अमरनाथ, आमना, मरियम, एंड राफिया। Yes, sir. Yes. Doctor, what did you say? Rafia, do you use spacebar for speaking to turn the mic on? Yes, Rafia. Sir? Do you use spacebar to turn the mic on? No sir, वो अजान हो रही थी इसलिए। ऐसा होगा। Can you please copy this down? देखिए ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, समटाइम्स इससे भी डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं वन मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दैट आल्सो। Raise your hand once you're done writing. Waiting for the ठीक है। Write a question. Determine the boiling point of a 0.2 molar small m molar solution, 0.2 molar aqueous solution. Pv is equal to 0.52 Kelvin kg per mole. हो जाएगा, बताइए।
सी नहीं सी केबी दिया हुआ है ना, यू हैव टू कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यू हैव बीन गिवन द केबी और मोलालिटी दोनों दिया हुआ है। मोलालिटी 0.2, केबी 0.52। यू हैव टू कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हो जाएगा? जल्दी गई अमरनाथ, आमना, मरियम, राफिया, जल्दी जल्दी बताएं, यस और नो। Yes, sir. हो Yeah. जाएगा ना? ठीक है, Yeah. send the answer in chat as A, B, C, D. Okay, Rafiya. Waiting for others. Okay, I will wait 2 more minutes. Please send your answers in 2 more minutes. You have to send the answer to Salim. Please don't send the answer to Learnivio. Send your answer to Salim Raza. Okay, Mariam Lohani. Okay, Amarnath. Just waiting for Amna name. Sorry, let us see. So, seemingly easy question, but there are a lot of places in which students can make mistake, है ना? उसको थोड़ा समझ लीजिए। हल्का सा बात है, बस कोई बहुत मेहनत यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, बट there are some mistakes that you can do, and we have got two mistakes here. Okay. So what we can calculate, all of you must have calculated delta TB, that is equal to KB into M. And what is KB? 0.52. Kelvin, Kelvin should be like this, Kelvin kg per mole into molality, that is 0.2 moles per kg, है ना? KB को नीचे लिख देते हैं,
kg and kg will get cancelled, mole inverse and mole will get cancelled, and we will get the delta TB. It is equal to 0.52 Kelvin. Okay, 0.52 Kelvin. And So what is delta TB? into 0.2. Oh, my bad. Into 0.2. That will basically give you delta TB. It is equal to 0.104 Kelvin. And what is delta TB? Delta TB is the boiling point of solution minus the boiling point of solvent. This is equal to 0.104 Kelvin. They have asked the boiling point of solution. Okay, so they have asked TB. TB will be equal to 0.104 Kelvin plus the T naught B plus the T naught B. What is T naught B? The boiling point of solvent. So what will be the boiling point of solvent, Amarnath? Tell me. What will be the boiling point of solvent? Please, 100 degrees Celsius. 100 degree Celsius. Okay. So basically, अगर हम 100 degree Celsius पे इसको में convert करें, then it will be 0.104 Kelvin plus 373. 373.104 Kelvin. ठीक है, अब ये तो यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं है. So you convert this to degree Kelvin to degree Celsius, then this will correspond to how much? 100.104 degree Celsius. Yes or no? Yes. Got this, everyone? Yes, sir. ठीक है. तो देखिए, ये तो आपका बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही मैथमेटिकल और मैकेनिकल वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन है. थोड़ा फील लेके भी हम लोग कर सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आपको बिल्कुल जो है ना याद कर लेनी है, दैट change in temperature for degree Celsius and Kelvin is same. अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास होती है 11th स्टैंडर्ड से, if you knew this or if you remembered this from 11th standard that change in temperature for degree Celsius and Kelvin is the same, क्या मतलब इसका? प्लीज ध्यान दीजिएगा. For example, if I have to go from, I'm going from degree Celsius, है ना? Degree Celsius पे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? 25 degree Celsius to, let us suppose, 30 degree Celsius. So what is the change in temperature? Tell me, Amarnath and Amna. What is the change in temperature? जल्दी 100. बताओ. 100 है. अरे 25 से 30 जा रहे हैं भाई मेरे. 5. हाँ, 5 degrees है ना. तो what is the value of the change? 5. So if I want to convert this to Kelvin, to 25 degrees Celsius will be 298 Kelvin. देखिए जरा, 273 ऐड कीजिएगा तो 273. 298 Kelvin, make sense? जल्दी बताएं. Yes, sir. ठीक है. And 30 degrees Celsius will be what? 273 ऐड करती है इसमें भी. We will be having increase. 10 to 0, 108. 303 Kelvin. Now what is the delta temperature in this case also? 5. Fine. So whatever the delta TB you are getting for Kelvin is the same delta TB that you will be getting for Celsius also. Make sense? Please tell me. ठीक है. So now obviously this अगर आपको याद होता then it will be quite easier कि delta TB it is equal to 0.104 Kelvin. Yeah, 0.104 degree Celsius. Now what is delta TB? The definition of delta TB is what? It is the increase in boiling point, elevation in boiling point. So what is the base boiling point for aqueous solution? For aqueous water के base क्या है? Water के base है आपके पास 100 डिग्री क्या Celsius. उसमें increase कितना करना है? 0.104 plus 0.104. This will be the boiling point of the solution. 100.104 degree Celsius. Got this? Is please tell me. Yes, sir. Amna and Amarnath, especially Yeah. you guys. समझ में आया आप लोग को? Yeah. ठीक है. Copy कर लीजिए इसको. This is I mean कुछ बहुत ज्यादा in depth नहीं है, लेकिन हाँ this will save a lot of time. और जो mistake है ना, इस mistake को ध्यान रखिएगा that you guys do. It's generally delta. They will ask you the boiling point of solution, and you guys will calculate delta TB and stop. Another mistake is Kelvin Celsius में confusion.
Raise your hand once you're done. Just waiting for Mariam Lohani. अमरनाथ हो गया आपका? अमरनाथ अभी टाइम? Yeah. It's okay. Moving on. अगर इसको आराम से कीजिएगा, ठीक है? सवाल एक क्लियर. Find the boiling point of a solution containing 90 grams of glucose in 520 grams of water. Molar weight of glucose is equal to 180 grams per mole. kb of water is equal to 0.52 Kelvin kg per mole. चलिए कीजिए आराम से. डायरेक्ट सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एनबी इंटू डब्ल्यू. ठीक है. डेल्टा टीबी निकालिए. डेल्टा टीबी के बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी निकालना है. ठीक है. डोंट फॉरगेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. बी. अच्छा, बी पुराना है. राफिया ने आंसर चेंज कर दिया. राफिया कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेशन कर रही है या फिर ऐसी तो ऊपर ऊपर से कर रही है? हाँ राफिया, No, sir, I'm calculating. कैलकुलेट ना. फिर क्या आंसर किया था आपने? अच्छा, डू यू हैव माय नंबर राफिया? डू यू हैव माय फोन नंबर? No, sir. डू यू हैव अ फोन विथ यू? Yeah, I have. ठीक है. प्लीज सेंड दिस नंबर टू योर मॉम और डैड. ठीक है. Okay. और ये नंबर जो है ना अपेयर होगा फिर ब्लू में. जब आप भेजेंगे मॉम या डैड को तो ब्लू में ऐसे क्लिक कीजिएगा. फिर then it will say chat with plus 917530999007. And then you send me whatever you have done.
Yes, Amarnath, that is correct. Very good. Okay, giving you guys 1 more minute. Send your answers. Rafi, that is also correct. Very good. Waiting for Mariam Lahani and Amna. Okay, let us see. So what is the information given in the question? Find the boiling point of a solution containing 90 grams of glucose. Mass of solute has been given as 90 grams. Of glucose and 520 grams of water. Mass of solvent is given as 520. Molecular mass of glucose, molar mass of the solute is given as 180. Kb is given as 0.5. They're asking the boiling point of solution. First of all, we will get, we can also write one more thing, that is T naught B. Boiling point of वाटर है तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस या फिर आप 273 केल्विन, जो भी आपने लिखा है दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं ना, दोनों लिखना जरूरी नहीं, दोनों से कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है। 273 में 373 केल्विन, 373 केल्विन, ठीक है। सो डेल्टा टीवी विल बी इक्वल टू K is 0.52, K into WB into 1000 divided by MB into WA. By the way, फॉर्मूला लिखने के भी आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख दिया कीजिएगा 0.5 into mass of solute, it is equal to how much? 90 into 1000. Just give me a second, guys. Hello. Sorry. Yeah. MB it is what? 180 into mass of solvent, it is equal to 520. So as you can see, 0.52 into 1000 will be 520 into 90 upon 180 into 520. So 520, 520 will get cancelled. 0 and 0, 9 and 18 will be get cancelled, and it will be 1 by 2. ठीक है, बस हो गया सवाल। डेल्टा टीवी इट इज इक्वल टू 0.5 केल्विन बोलिए और 0.5 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी लिख दीजिए चलेगा। तो व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 100.5 डिग्री सेल्सियस या 373.5 केल्विन। Those who have not done, please copy this down. आसान सवाल था, होना चाहिए था। See, we are not going to do too many questions in this because we have to extrapolate on this particular topic once we read the Van Hoff factor. Okay, so Van Hoff factor, abnormal molar mass is a particular topic that we have to study,
एंड दैट इज द मेन क्वेश्चन। यहाँ पे आप 10-10 सवाल कर लिए आसान आसान से, कुछ नहीं फायदा होने वाला है, बिकॉज जो हार्ड सवाल आने वाले हैं those questions will be from the abnormal molar mass. If you are, most of the people should be able to do these questions after 1 or 2 questions. ठीक है, but tougher questions will be in abnormal molar masses, so we will be doing those questions more. ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस की आपको चीजें आती है बाय डूइंग इजी क्वेश्चंस। आपको हार्ड सवाल जब आप कर पाए ना, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। ओके, सो वो मीडियोक्रिटी लेवल पे आप प्लीज अडहियर मत कीजिएगा, इवन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, हम आगे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात ही नहीं कर रहे हैं। इन सोल्यूशन इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस जहां पे बच्चे अटकते हैं, दोस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एब्नॉर्मल मोलर मास मोस्ट ऑफ। ठीक है, वही ज्यादा सवाल आता है। Raise your hand once you're done. Waiting for Mariam. ठीक है, अरे यू विल गेट होमवर्क, तो सेल्फ स्टडी में आप कर लीजिएगा खुद से, है ना, बहुत टफ सवाल यहाँ पे नहीं है। क्लास में जो हम ज्यादा फोकस करेंगे ना, दैट विल बी ऑन टफर साइड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा पीएस। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में जो पॉइंट्स है ना, जो ग्राफ वगैरह है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस क्लास में वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल्स ओनली, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा टीवी एंड डेल्टा टी फॉर वेरी सिमिलर। तो इस वजह से एक दो न्यूमेरिकल इससे कर लेंगे जल्दी से, तो फिर आपको याद है। ठीक है, तो आई विल डायरेक्टली राइट डेल्टा टी एफ is directly proportional to m, and therefore delta tf, remove the proportionality sign, I have to add a proportionality constant and make it an equation, will be equal to tf into m. ठीक है, so what is this kf? Ioscopic constant. It is molar depression constant and molar depression in freezing point constant, molar depression constant, और cryoscopic constant। cryoscopic, cryo का मतलब होता है something related to cold, cryoscopic constant। ठीक है, now we will define what is Ks, very similar to Kb। Kf is the depression in freezing point when depression in freezing point when concentration of solution is 1 molar or unity। ठीक है, यूनिट के बारे में आप खुद ही थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे। हाँ, यूनिट ऑफ केफ is going to be same, तो डेल्टा टीएफ आएगा, दैट विल आल्सो केल्विन, है ना, क्या होगा, किसमें होगा, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल और मोलर मास। I hope you are writing with me, तो लिखते रहिएगा। And further we can write delta TB is equal to KF into WB into 1000, whole thing divided by MB into WB. From here we can get the molar mass of the solute, which will be equal to KF into WB
into 1000, whole thing divided by अरे डेल्टा टी भी लिख दिया हमने, माय बैड, इसको डेल्टा टी एफ कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। ये ना मेरे से बार बार ये गलती हो जाती है, ठीक है। मैं राइटिंग डाउन कि हम डेल्टा टी एफ को टी भी लिख देते हैं, के एफ को के भी लिख देते हैं, ठीक है। तो उसको अगर मेरे से गलती हो जाए देन प्लीज ट्राई टू करेक्ट, ठीक है। डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ into डब्ल्यू ए, ठीक है। आई विल समटाइम्स मिस्टेकनली राइट टी एफ और सॉरी टी बी इंस्टेड ऑफ टी एफ। चलो भाई साहब एक और चीज हम लिखना भूल ही गए, व्हाट इज डेल्टा टी एफ? डेल्टा टी एफ इज द टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाए या मेल्टिंग पॉइंट बोला जाए, दोनों सेम ही चीज है। एंड टी एफ इज व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डिप्रेशन है, so what will happen? The freezing point will decrease on adding a non-volatile solute. Freezing point will decrease. Depression in freezing point. Write this down, raise your hand. Once you're done, we'll do a numerical. Please raise your hand once you're done. Just wait for a minute. तो लिखिएगा 45 gram of ethylene glycol, 45 gram of ethylene glycol, C6 T2H6 O2 is mixed with 600 gram of 600 gram of water. Determine the freezing point of solution. KF of water equal to 1.86 Kelvin kg per mole. ठीक है। So the only thing that is not given here is what? देखिए आपके पास है mass of solute 45 grams and mass of solvent is equal to 600 grams. ठीक है। Then you have what? Freezing point.
P naught B है आपके पास, P naught F, आपको P naught B लिख देते हैं, P naught F, that the freezing point of pure solvent that is equal to what, 0 degree Celsius or 273 Kelvin, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप. The missing thing here is mass of solute, molar mass of solute. Molar mass of solute you can calculate from the C2H6O2. So the molar mass of the solute will be what? Mb is equal to 2 into 12 plus 6 plus 2 into 16. So this will be equal to 24 plus 6 plus 32. You get it for 62. Okay, now we can calculate delta TB, delta TF is equal to KF into WB into 1000 divided by MB into WM. KF कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1.86 into WB is given as 45 into 1000 whole thing divided by molar mass of solute is 62 multiplied by the given solvent. Solvent is 600. So I think two zeros can be getting cancelled like this. Now do the calculation. राफिया थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिएगा जरा. Slight mistake, I think. The value will be not that big. Decimal point में देखिए शायद कहीं mistake है राफिया. अमरनाथ यूनिट लिख दीजिए प्लीज. योर आंसर इज करेक्ट बाय द वे. हाँ, नॉट इज परफेक्ट. राफिया, Yes, sir. डिड यू गेट द मिस्टेक या मिस्टेक नहीं मिला दिया आपको? Sir, got it. Perfect. If you calculate this, you will get this value, delta TF value. You will get this value as 2.25. Kelvin या फिर 2.25 डिग्री सेल्सियस किसी में ले सकते हैं. Now the freezing point of solution will be equal to, if you take degree Celsius, so the base we have is 0. 0 से decrease करना है. How much decrease? 2.25. So it will be minus 2.25 degree Celsius or 270.75 Kelvin. So calculation बाकी है, nothing else is remaining. Can everyone
वेटिंग फॉर मरियम। अमरनाथ आपने तो लिख लिया ना, अमरनाथ। Yeah. ठीक है। अब छोटा सा एक क्वेश्चन है अगेन, फॉर्मूला आपको बस याद कराने के लिए थोड़ा सा ही करा दिया है। एक सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे इन द स्टार्टिंग। राइट नाउ यू राइट few points on applications of depression and freezing point. So when adding a particular solute, freezing point decreases, है ना? तो अगर आप आइस में नमक डालेंगे, then what will happen? The ice will start melting quickly. Why? Because it is going to make a solution. ठीक है, और वो क्या करेगा? वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। मतलब because ice will be at 0 degrees Celsius as soon as you add salt in it. 0 degree Celsius पे पहले वो freeze हो रहा था, but now it should freeze at -2, let us suppose. But the current temperature is 0 and its freezing point has been decreased to -2. ठीक है, तो 0 पे अभी है, freezing point -2 है। ठीक है, तो -2 तक तो जा नहीं सकता है, it will what will happen, it will melt, and that's what we use is right in cold countries, the frozen ice on roads during winter is melted by spraying salt like NaCl or CaCl2, which decreases the freezing point of water. ठीक है, तो आइस को जल्दी मेल्ट करने के लिए ये होता है। सेम थिंग इज de-icing of aeroplanes. Basically, the wings of aeroplanes, they have kind of some moisture, है ना? And when you are going to move across clouds, first of all, then you will acquire the wings of the aeroplane will acquire some moisture. And as it goes above the cloud, the temperature decreases. When the temperature decreases, what is going to happen? The temperature decreases, the moisture it will get converted to ice. ठीक है, तो जब वो नीचे लैंड करेगा, then the wings of aeroplane will be having ice. In order to de-ice it also, you have to use the same method. That is by spraying NaCl or CaCl2. Please write this down, raise your hand once you're done.